Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Bilal Abbasi, and I'm here today to introduce you about the summer pack that Dr.AQ.KhanSchoolSystem has designed for the students, considering the current situation that is created by coronavirus. We have planned a summer pack that is very beautifully designed by the head office, considering the current situation. As our students have just promoted to the new class, and after their examination completed, we all are facing this current situation, and we have to announce some notification for the students before starting the new session. And considering this all, we have designed a summer pack that is so beautifully designed that we want to keep in touch. We want to keep our students in touch with the studies, and get familiar with the new concepts. The main focus of this summer pack is so that all students get very good introduction, so that all students have very good interaction with the new concept and the new things without facing any difficulty. हमारी कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनको बताया जाए कि what you will have going to have new things in the upcoming session, and that's so beautifully planned that you don't require the stationery, you don't require the books for it. All things are there in this booklet. This is grade 8 mathematics summer pack. In the start, we introduced the concept of transformation. Transformation is basically what if you move an object from one point to another point, that is transformation. Transformation is of three types. जैसे आपको idea है कि first of all is translation, the second is rotation, that the third one is a reflection. These are the three types of transformations. Translation में simply क्या करते हैं कि simply उस exact object को हम उसकी exact coordinates को we move them to the next point. That simply is the translation. Just like this given object, if we move this object as it is from here to here, that is translation. If we rotate that object, that is called the rotation. Simply if we rotate that object according to the coordinates, that is the rotation. And if the third type is the reflection, if we take the reflection of it, look over here, that is a reflection example. If this object is given, if we take the reflection of that object, it becomes that. This is the reflection of that. That is the third type of transformation. ऐसे ही उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दी है आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का, और उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिनको आपने सॉल्व करना है. दीज आर सो सिंपल, यू कैन इजीली सॉल्व देम आउट. ऐसे ही हमने डिफरेंट शेप्स दी हैं, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्ड हो जाए अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक ना. इसकी एप्लीकेशन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा, ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, एनिमेशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यू शुड नो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट ना. इंशाल्लाह आपके अपकमिंग सेशन में आपको ये चीज़ ज़्यादा डिटेल में बताई जाएगी. हियर जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट दैट कॉन्सेप्ट. ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको थोड़ा सा हिस्टोग्राम के बारे में बताया जा रहा है. हिस्टोग्राम इज टाइप ऑफ द बार ग्राफ ना. अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्टेन रेंज और इंटरवल्स, दैट बेसिकली द हिस्टोग्राम ना. अब जैसे यहाँ पे एक आपको कुछ इंटरवल्स गिवन है और ये वैल्यूज़ गिवन है. अब इन इंटरवल्स में कितनी वैल्यूज़ लाइक कर रही हैं वो अपनी वैल्यू लिखनी है ऐसे ही, देन यू हैव टू ड्रॉ दैट ग्राफ ना. इट्स सो सिंपल, सो इजी, यू कैन डू इट इजीली. और नेक्स्ट आपको कुछ हिस्टोग्राम्स गिवन है, उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है. आपको क्यूरीज रिलेटेड टू दैट हिस्टोग्राम एंड यू फाइंड आउट द वैल्यूज़. उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सपोनेंट्स. आपको एक्सपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए कि पावर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने उनको मैनिपुलेट करना है, कैसे उनके ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव बीन गिवन 5 power 3, दैट मीन्स you have to multiply 5 3 times, that the result will be 125. Similarly, if you have 2 raised to power 3, that means you have to multiply 2 3 times and you will get the answer is 8.
उससे रिलेटेड आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, यू हैव टू सॉल्व देम आउट. 0.5 power 3, the first example is 0.5 power 3 and then is 0.5 minus power. If you have been given negative power then you will take that in the denominator. फिर आपको उसको सॉल्व आउट करना है. उससे से रिलेटेड आपको सारे कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है और दीज आर सो सिंपल, यू कैन सॉल्व देम आउट. आपको कुछ आइडिया होना चाहिए और इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह. Then next you have the properties of exponents. एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सारी आपको डिटेल मेंशन है और ये आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको आइडिया लेना है. देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज प्रॉपर्टीज़ इन द अपकमिंग क्यूरीज, अपकमिंग प्रॉब्लम्स. आपको ये आइडिया जब हो जाएगा कि कैसे पावर्स को हैंडल किया जाता है, देन यू कैन ईजिली सिंपली अप्लाई दीज पावर्स प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट्स अपॉन दी प्रॉब्लम्स. Then next we have is the same exponent problems in the fraction forms and in the and you have to solve the division problem, multiplication problem related to those concepts. It's so simple. And then you have this you have been given some values of alphabets in the exponent form and you have to evaluate those. You must have some idea about it, how you have to solve the number along with the exponents. तो उनमें आपने for example you have been if you have been given a very big number, how you can transform that into the power formula, exponential formula. It's so easy, you can easily do that. If you have been given, for example, this big number and you have to translate it into exponent formula, it's so easy. You can count down the figure zero numbers and you have to write it in the exponent form. Then next is if for example if you have been given 10,000, that means 1 multiplied by 10 raised to power 4, that is simple exponent form of that 10,000 figure. Then you have been given a word problem related to that exponent numbers and you have to solve them out easily by applying operation on these exponent numbers. So that's all about mathematics for grade 8. I hope so students will enjoy doing this summer pack specially designed by Dr.AQ.KhanSchoolSystemCapitalCampus school system for bright and shining students. Hopefully students will grasp good new concepts. Best of luck.